Hello everyone. I welcome you to Gyan Trishna platform, and today again in this session we are going to see what to read in today's newspaper. आज 14 फरवरी 2022 है और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं वो आपके सामने हैं स्क्रीन पे. फर्स्ट वन आर्टिकल इज श्रीलंकन नेवी अरेस्ट 12 तमिलनाडु फिशरमैन सीजेस 2 boats. Then on page number 1 again you have one more important news. India non-committal on funding curbs on UK NGOs. Now फर्स्ट पेज पे ही थर्ड जो आर्टिकल है वो है चंद्रनगौर फ्रेंच हेरिटेज अवेट्स फेसलिफ्ट. सो ये तीसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. ये तीनों पेज 1 पे है. देन सीधा पेज नंबर 6 पे आते हैं. ऑन द एडिटोरियल पेज यू हैव वन आर्टिकल अ डिपिंग ग्राफ इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ. तो पेज नंबर 6 पे ये आर्टिकल है. पेज नंबर 7 पे जो नेक्स्ट एडिटोरियल आपको इस बार पढ़ना है वो है द एरा ऑफ कम्बैटिव फेडरलिज्म. आज के न्यूज़पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, द एरा ऑफ कम्बैटिव फेडरलिज्म. इस आर्टिकल में क्या क्या मिलेगा अभी हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं. नेक्स्ट on page number 7 itself you will find one more article that is India's semiconductor dream. अब ये आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है. okay? हम लोग देखेंगे why it is important and why it is there in the news. So let's start with the first news. Sri Lankan Navy arrests 12 Tamil Nadu fishermen, seizes 2 boats. अभी लास्ट एक वीक में you might have seen a lot of articles were there related to India Sri Lanka relation. इंडिया श्रीलंका रिलेशन पे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स थे. एक्सप्लेनर सीरीज भी था, हमने कवर भी किया था. सो अभी एक और न्यू रिसेंट डेवलपमेंट है. श्रीलंकन नेवी ने एक बार फिर से 12 तमिलनाडु के फिशरमैन को अरेस्ट किया है. ओके, सो इट्स नॉट दैट यू हैव टू जस्ट मेक नोट्स आउट ऑफ इट. जस्ट गो थ्रू दिस आर्टिकल, हैव अ लुक एट इट एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट. मूविंग on the same page you have one very important news, and this would be related to art and culture portion and also modern history. Chandernagor is a French, you can say that first trading post on eastern bank of Hooghly. It was set up by French. So यहाँ पे एक building है जिसकी recovery करनी है, you can say that it has to be restored, and for that purpose this news has again been highlighted. Okay, now it's not that you have to read about this particular building. The building is not that much important. What you have to do, you have to know about the significance of this area. Chandernagor is one of the first, or you can say the first trading post on the eastern bank of Hooghly, which was set up by French, and for that purpose you have to read it. You can read more about what were the different posts or what were the different setups made by French in India, because we all know about the British, but the French, they can ask you in modern history about these questions. So again, this thing you can see what were the other posts of French in India. Now on the first page itself you have one article, India's non-committal on फंडिंग कर्ब्स ऑन यूके एनजीओज. बेसिकली जो एफसीआरए में चेंजेज आए हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उससे रिलेटेड ही ये आर्टिकल है. इसमें आपको बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस एक बेसिक चीज़ जो करनी है, यू हैव टू रिवाइज व्हाट आर दीज एफसीआरए. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है, उसमें गवर्नमेंट ने अभी में क्या चेंज किया है, जस्ट गो थ्रू इट एंड दैट वुड बी सफिशियंट. देन एडिटोरियल पेज पे आते हैं. एक जो एडिटोरियल आज आया है वो है लेबर सेफ्टी से रिलेटेड. सो इस आर्टिकल में यू कैन सी यू हैव बीन गिवन अ लॉट ऑफ डेटा. ओके, इसमें बहुत सारे डेटा आपको हाईलाइट किया गया है. इसमें आपको यह भी बताया गया है कि जो स्टैटिस्टिक्स है इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड वो कौन से डिपार्टमेंट, कौन से मिनिस्ट्री पब्लिश करती है. ओके, अभी का क्या स्टेटस है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, स्टेट्स के साथ जो कोलैबोरेशन है डेटा शेयरिंग में वो कितनी इफेक्टिव है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कमिंग आउट ऑफ इट. एंड जो अभी हाल फिलहाल में, लाइक वी ऑलवेज से अबाउट इंस्पेक्टर राज को खत्म किया गया इंडस्ट्री में. ओके, सो इंस्पेक्टर राज के खत्म होने से हमें बहुत सारा बेनिफिट मिला, इंडस्ट्रीज बेटर तरीके से ग्रो कर पाई, बट उसकी क्या क्या चैलेंजेस निकल के आई हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल. ओके, सो दिस इज वन थिंग विच यू कैन गो थ्रू. दिस आर्टिकल इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट.
Now, coming to the most important article of the day, the era of combative federalism. Okay, now you can see we have seen cooperative federalism. Okay, cooperative federalism we have also seen, and this is combative federalism. So, first, in this article itself, you will know about how this originated, and this article is very important because it gives you a list of a series of actions, Supreme Court judgments, and so many other articles and all. Okay, it talks you about basically how the post of governor has been misused in the past. Then it also tells you what has been the observation of Supreme Court on various instances related to Delhi, related to other states, related to the power of governor, and so on. Okay, so this is basically, you can say that, a revision of your concept of federalism. Okay, and now see, when you have these words coming in, keywords coming in newspaper, it becomes quite important. So you have to know about what is this combative federalism, cooperative federalism, and other key terms associated with federalism. Okay, so this article, collaborative federalism, is also there. Just find out what all these terms mean and also see the judgments and the facts and other things related to these posts. Okay, now moving on to the last article of the day, India's semiconductor dream. Now, you know that electronics industry is like one of the major industry in the present times. The chips which we are using in mobile phones, laptops, and so many other communication devices, the semiconductor industry forms the base of it. It provides the necessary chips, and India has not been doing very great on it in the last 10 or 20 years, or from the beginning India has not been doing great. But recently, again, the interest has been revived. Government has come up with certain schemes. Okay, government has come up with a 10 billion package, $10 billion package. And also, what is going on in the world, what can be done forward, like they have given one word, fab clustering. Okay, like cluster industry approach is there. So fab clustering, this approach is also explained in this article. Okay, then also what can be done to increase the efficiency of the semiconductor industry, why it must be done, all these things are explained in this article. So just you can just go through it. Very important article and very important for GS paper 3. GS paper 3 very important. Okay, so that's all for today. Stay tuned with our Telegram channel for more updates. Thank you everyone.